we are doing sets, and in the sequence of set theory, today we are going to unfold a new concept of sets, that is subset of a set. What do you mean by subset of a set? A set A is said to be subset of another set B when every element of set A is in set B. What I spoke, this already written here. I mean, if A is a set, suppose it has elements 1, 2, 3, and B is a set, it has elements 1, 2, 3, 4. You can see very well, every element of set A is element of set B. Then A is subset of B. If A is subset of B, then it is represented as A is a subset of B. This is symbolical representation that A is a subset of B. This is example 1. Let us take another example. Suppose A has elements A and B, and there is another set B which has element A, B, F and G, and C is another element set which has element A, B, E, I, B is already taken, F and G, and D is another set. Suppose I take it as A and I, and F is another set which has only element A. Now we are discussing which set is a subset of which set, right? A has element AB, and these two elements are present in set B. So A is a subset of B. Okay, A is a subset of B, right? Now we'll check, compare A and C. A has element AB and C has element A, B, E, I, F, G. So A is subset of C also. Now set A has element AB and set D has element A and I. All the elements of set A are not in set D. So A is not a subset of D. A is not a subset of D, right? A has element AB, two elements are there, and F has only one element A. So just compare A and F. A is not a subset of F. F is a subset of A because all the elements of set F are in set A. So we can write it as F is a subset of set A. Now compare B and C. B has element A, B, F, G, and C has element A, B, E, I, F, G. Wonderful. All the elements of B are elements of set C. So B is subset of set C. Now compare B and D. Not all the elements of D are in set B because B has many elements. Then ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि B D का सबसेट हो जाए. We'll check that whether D is a subset of B. So there is element I which is not in B. Now compare C and D. C has element A, B, E, I, F, G, and D has A and I, and all the elements of D are in C. So you can say that D is a subset of C. Compare D and F. Compare C and F. Compare B and F. F is a subset of every set. F has only element A which is present in every set A, B, C and D. And you have already written that F is a subset of A. In the same way, F is a subset of B, F is a subset of C, and F is a subset of D. I hope you have got the concept of subset. There are some points you need to remember. Very first point, that every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. Suppose A is any set, then A is subset of A. And number 2, empty set
is a subset of every set. Phi is a subset of every set. These are two main things you need to remember. Now, one more important point is there. A set has how many subsets? Suppose we take a set A. It has elements 1 and 2. There are two elements, right? So, as I have written that every set is a subset of itself and empty set is a subset of every set. So, two subsets are obvious. A के दो सबसेट हमारे पास ऑब्वियस हैं. कौन कौन से? नंबर फर्स्ट इज एम्प्टी सेट, क्योंकि आपने कहा है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एंड नंबर टू इज ए इटसेल्फ. क्यों? क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जैसे हर व्यक्ति अपना फ्रेंड होता है. एवरी पर्सन इज अ फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ, राइट? नंबर थ्री, वन, ओनली वन. एंड नंबर फोर, only 2, and A is 1 2, right? So there are 4 subsets of the set A. Observe that इसमें कितने एलिमेंट हैं? It has 2 elements. Then there is a formula which I want to tell you, that number of subsets of a set having n एलिमेंट्स. अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट हो सकते हैं? ये मैंने जस्ट आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया था. द फार्मूला इज 2 raised to the power n, राइट? देखिए इसमें कितने एलिमेंट थे? n की वैल्यू क्या थी? 2. सो नंबर ऑफ सबसेट्स होने चाहिए 2 raised to the power 2, that is 4. And yes, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Only element 5, only set, I mean empty set or void set, null set. A 1 only and 2 only. Students, these 3 are very important points. Let us analyze once again that every set is a subset of itself. Suppose we take a set A. It has 3 elements 1 2 3, and there is another set B. It has elements 2 3 1. First of all, you need to remember one thing, that order does not matter in a set. Set B is a set having 3 elements 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, whatever you like to say. So A and B both are equal. तो इससे आपको इक्वल सेट्स का भी कॉन्सेप्ट एक बार और मैंने समझाया. नाउ सेकेंड थिंग, यू कैन से A इज अ सबसेट ऑफ B. B इज इक्वल टू A, सो यू कैन ऑल्सो से A इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ B, और B इज अ सबसेट ऑफ A. ये सब लिखने के हमारे कितने तरीके हैं एक ही बात को. एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड these things in a broader manner. One more term is there. A is a subset of B, as you have understood. Then what is the relation of B with A? Suppose I say A is son of B, then B is father of A. In the same way, if A is a subset of B, then B is a superset of A, right? I mean, if A is a subset of B, then B is a superset of A. So remember these two vital terms, subset and superset. A is a subset of B, then B is superset of A. Now we are going to study real numbers. रियल नंबर के बारे में हमने क्लास 6 से पढ़ना शुरू किया है, और अब हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए हमें रियल नंबर्स के रिवीजन की बहुत ज़रूरत है. यू नो वेरी वेल, रियल नंबर्स आर दोज विच लाई ऑन रियल लाइन, राइट? हम ये अच्छे से जानते हैं. ऑलराइट, अब प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, 0 1 2 3
4, -1, -2, -3 and so on. What are natural numbers? Natural numbers are 1, 2, 3, 4 up to infinity, right? नेचुरल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. So now you can say that natural numbers are subset of real numbers. You know very well, between any two real numbers there lie infinite many real numbers, many rational and irrational numbers. हमने 1 के बाद 2 लिया, 2 के बाद 3 लिया, 3 के बाद 4 लिया. ऑब्वियसली इनके बीच में हजारों करोड़ों रैशनल और इरैशनल नंबर हैं जो अभी हमने छोड़ दिए हैं. नाउ आगे चलते हैं. होल नंबर्स. आई हैव टेकन दिस टॉपिक. हो सकता है कि आपको पुराने उस वीडियोस में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो. मुझे मालूम हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब का कनेक्शन आपस में क्या है, एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं. होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय W एंड दीज आर 0, 1, 2, 3, 4. अब आप क्या कह सकते हो? नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स एंड होल नंबर्स ऑब्वियसली आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. इंटीजर्स. इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कई बार z से या z बोलते हैं और I भी कहते हैं. दीज आर 0, 1, 2, 3 टू इंफिनिटी एंड -1, -2, -3 टू -infinity. राइट? आपने इन सब नंबर्स को लिया है और यहाँ जितने भी इनफाइनाइट नंबर थे वो अभी आपने छोड़ रखे हैं. राइट? इफ यू टॉक अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स, then positive integers means 1, 2, 3 to infinity. Now you see that W, that means set of whole numbers, is subset of integers. Set of natural numbers is subset of whole numbers. आपके पास क्या सीक्वेंस बन के आती है? that natural numbers are subset of whole numbers, whole numbers are subset of integers and integers are subset of real numbers. Rational numbers. Rational numbers are those numbers which can be written in the form a upon b. अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? x such that x is equal to a upon b. x such that x is equal to a upon b. a और b क्या है? a and b are integers. a is integer and b is also integer, so we can write it as a comma b, both are integers. But one more thing is there, we need to mention that b is not equal to 0. denominator 0 नहीं बनना चाहिए. What are irrational numbers? Very first question. And I think you may also think कि यहाँ तो मैंने सबको लिस्ट फॉर्म में लिखा है. Why not I have written set of rational numbers in list form? क्योंकि we know that natural numbers में we are moving from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. But between 1 and 2 there lie infinite many rational and irrational numbers. Although ये सब sets infinite sets हैं. Rational numbers का set भी infinite है. But इसको list form में नहीं लिखा जा सकता. 1/2, 2/3, 3/7, 7/8, ऐसे कितने हम नंबर लिखेंगे? We cannot write uncountable. Although these are also uncountable. लेकिन rational numbers का जो set है वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा. x such that x is equal to a upon b or you can say p upon q, कुछ भी. और उसके बाद हमें इंट्रोडक्शन देना है. a and b are integers and denominator is never equal to 0. What are irrational numbers? What are irrational numbers? Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of a upon b. And I can say one more thing. Irrational numbers are not rational numbers. All these numbers are rational. Why so? Because 2 is
नॉट ओनली 2/1, तो ये a/b की फॉर्म हो गई. इट इज ऑल्सो रैशनल. -2, -3, whatever you pick, -3 can be written -3/1. It has denominator as 1. Then all these sets are subset of rational numbers Q. So इस सीरीज में अगर अभी मैं R को हटा दूं तो हम ये भी लिख सकते हैं, these all are natural numbers are subset of whole numbers are subset of integers are subset of rational numbers, and rational numbers are subset of real numbers. Now what are irrational numbers? Irrational numbers are those which are not rational. पहली बात तो ये हो गई, the numbers which are not rational. That means which cannot be written in the form a/b, where a is integer, b is integer and b is not equal to 0. So आप इसको कैसे दिखाएंगे? So we can write it as x such that x is a real number. Which type of real number you are talking about? Those real numbers which are not rational. This is the introduction of irrational number. One more way of saying this irrational number, that x such that x belongs to r minus q. R minus q is that out of real numbers you have subtracted rational numbers. If you are not comfortable with this notation, you go with this, right? X such that x is a real number, because rational number and irrational number both are real number. In fact, real number को अगर हम categorize करें तो real number सबसे पहले दो कैटेगरी में होते हैं. One is rational and others irrational, right? ये बात आप ध्यान रखिए. Rational Q and irrational R minus Q. Why so? क्योंकि रिप्रेजेंट किया हमने रियल नंबर्स को R से. अब ये जितनी भी हमने पढ़ी हैं टाइप्स, ये सब रैशनल के हेडिंग के अंदर आती हैं और इरैशनल के हेडिंग के अंदर ये नहीं आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इरैशनल नंबर जैसे आप हमेशा जानते हो, √2 is irrational, √3 is irrational. You can say that why can't we write √2/1? We can write, but √2 is not an integer now, so this is not rational. This is irrational. Now we are unfolding a very very important concept, interval. Interval as a subset of R. बहुत ध्यान से समझिए. आपके पास रियल लाइन है, आपने नेचुरल नंबर्स का सेट लिया, तो आपने लिया था 1 2 3 4 5 6. Suppose, as the name suggests, interval. What do you mean by interval? Suppose I take all the elements from 1 to 2. This. I am taking whole this portion. This is known as interval. पूरी रियल लाइन हमारे पास है from -infinity to +infinity, and I am taking interval, a piece of this real line, 1 to 2, 1 to 3, 0 to 1, -1 to +1, whatever. Then I is interval. I contains x such that x is a real number. X such that x is a real number. That x is greater than equal to 1 and less than equal to 2. मैंने ये सारे एलिमेंट लिए. आप फिर समझो इस बात को. मैंने इस बात को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है कि all the elements of the real line which lie between 1 and 2. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ तक तो हम समझ गए.
all the elements I am taking, right? तो 1 to 2 means all the elements 1 and 2. ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे हम इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज I have written x such that x belongs to n, that x is greater than equal to 1 and less than equal to 4. That means x ऐसा है कि x एक नेचुरल नंबर है और x 1 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी हो सकता है. नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड ऑल. तो हमारे एलिमेंट आते हैं 1, 2, 3 एंड 4. See the difference. Here I am taking r, here I am taking n. So this is very important concept. आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि x किसको बिलोंग करता है. Whether x belongs to r, x belongs to n, x belongs to w, x belongs to integers, I किसको बिलोंग करता है. Now what is the basic difference in these two sets? This is a finite set having only 4 elements, and this is infinite set. It has crores and crores and crores, uncountable number of elements which are rational as well as irrational. So this is interval. Interval is a continuous set. Interval is a continuous set. दो शब्द होते हैं, one is continuous and other is discrete. आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप ऊपर जाते हैं फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, यू यूज स्टेयर्स. तो स्टेयर्स क्या है? डिस्क्रीट है, बिकॉज यू स्टेयर्स आर ऑफ दिस, यू मूव लाइक दैट 1 2 3, यू कैन काउंट, देयर आर 9 स्टेयर्स, 12 स्टेयर्स, 13 स्टेयर्स. बट अगर आप किसी प्लेन पर चढ़ते हैं, देयर इज सम इंक्लाइंड प्लेन, देन दिस इंक्लाइंड प्लेन इज कंटिन्यूअस. आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं बट स्टेयर्स नहीं है. सपोज आप एक हिल पर चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स नहीं है, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस सरफेस है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट. ओपन द डिक्शनरी और आप उसको ध्यान से और पढ़ें. सो इंटरवल इज अ कंटिन्यूअस सेट. कंटिन्यूअस मीन्स ऑल द एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एट 2. अब आप कहेंगे क्या ऐसा ही होता है? नो. इंटरवल 4 तरह के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल. लेट अस स्टडी. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल. which suppose I take 4 examples. I1 is interval. I have written there are 2 brackets जो हमने इस तरह से बनाया है. बॉक्स ब्रैकेट हमने यूज किया है. दिस इज क्लोज्ड इंटरवल. This interval contains all the elements which has 1, 2 and all the elements between 1 and 2. If you write in set builder form, x such that x is a real number, that x is greater than equal to 1 and less than equal to 2. Right? Now, I2 सेकेंड इंटरवल आई हैव टेकन. आप ध्यान से देखिए, मैंने इस बॉक्स ब्रैकेट को यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लगा रखा है. दीज 2 ब्रैकेट्स आर नॉट फेसिंग टू ईच अदर. यहाँ पर एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं. इसको हम ऐसे भी बना सकते थे. देयर आर 2 रिप्रेजेंटेशन. व्हाट डज इट मीन? अब आप समझ जाएंगे दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन द real line that I am taking all the elements from 1 to 2 including 2 itself, but 1 is not included. 1 is not included. 1 is not included. I made a circle, empty circle. That means interval I2 has element 1.00001, 1.00001, but 1 does not belong to I2. 1
I2 को बिलोंग नहीं करता है. 1 से just next element, uncountable number of elements are there. You cannot say 1.001, 1.0000001 which is. So always remember 1 इसको बिलोंग नहीं करता I2 को. This is I2 and this is I1. Representation of I1 in pictorial form, in interval form, in set builder form. I3. I3 has element 1 to 2 but not including 2. 2 की तरफ हमने कैसा ब्रैकेट लगाया है? ओपन. Well, I2 is known as, this is closed, this is left half open, or you can say left half, right half closed. Now you are in learning stage, you can remember this is closed interval, this is right half closed, this is left half closed. Left half closed or right half open. Right half open. Write this as statement form x such that x belongs to R, x greater than equal to 1 and strictly less than 2. अगर आप इसे पिक्टोरियल फॉर्म में बताएंगे 1 is included but 2 is not included. So आप 2 पर कैसे बना देंगे? Like a bubble. This is I3, pictorial representation of interval I3. I4, right half open, left half open, दोनों तरह से ये open है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? Open interval. Open means you can write it as x such that x belongs to R, x is greater than 1 and strictly less than 2. Strictly greater than 1 and strictly less than 2, that means 1 and 2 both are not included in this set. अगर हम इसको बनाएंगे पिक्टोरियली, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. All the elements between 1 and 2 but neither 1 nor 2 belongs to this set. This is I4. 1 does not belongs to I4 and 2 does not belongs to I4. इसमें जो एलिमेंट है वो 1.001 से लेकर 1.999999 तक एग्जिस्ट करते हैं इसमें, बट 2 आते ही 2 इस सेट को बिलोंग नहीं करता है. इसको अगर आप लिखेंगे तो 2 I3 को बिलोंग नहीं करता है. There is a question I have taken for you, that write each of the following subset of R as interval and find length of interval also. The main new thing is length of interval. Okay, look at it. Question number 1 or first part, x such that x belongs to R, x is greater than equal to 2 and less than R. Greater than equal to 2 means 2 and 4 is not included, then this is the symbol. Are you getting it? X such that x belongs to R, x is greater than 1 and less than 3. Greater than 1 and less than 3 both are not included. तो दोनों साइड से ये ओपन है 1,3. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट फ्रीक्वेंटली अब हम लिखेंगे we will use this symbol only. X such that x belongs to R such that x is greater than -1 and less than equal to 4. Open from side -1 and from other side it is closed because less than equal to. जहाँ भी इक्वेलिटी का साइन है वहाँ पर क्लोज्ड है, जहाँ पर इक्वेलिटी का साइन नहीं है, इनइक्वालिटी है, वहाँ पर ये ओपन है. ग्रेटर देन नेक्स्ट क्वेश्चन, x such that x belongs to R, x greater than equal to 0 and less than equal to 3, then it is closed from both the sides. Now second part, find length of interval. लेंथ अगर हम निकालते हैं इसकी, तो लेंथ में सबका एक ही मेथड है, फ्रॉम
लास्ट 2 फर्स्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है. 4 minus 2 लेंथ इज 2. यहाँ पर लेंथ निकालते हैं. 3 minus 1 दिस इज 2. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये इंटरवल ओपन है या क्लोज्ड है. लेंथ मीन्स लास्ट एलिमेंट से आपको फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पर अगर हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 4 minus 1 दैट इज 5. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेंथ इज 3 minus 0 दिस इज 3. That's all for this exercise today. I hope you have understood this. So do the assignment I'm giving to you. Till then, bye bye.